Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tekchin Deshwal and now we will be dealing with the second lecture video on network analysis. In the last lecture we were studying about the circuit elements that were resistance that we completed, and if you have revised it, you know that how do we characterize any element with its VI characteristics. Now we will further go into inductor and capacitor. Before that, let's study about Ohm's law. We have listened a number of definitions of Ohm's law, like V is equals to IR, I is equals to GV, or J is equals to sigma E. There are many, but the basic or the real Ohm's law. So the one which is called as the point form or the microscopic form, or which was the first form that was given by Ohm's, is it states that at a constant temperature, it is very important, at a constant temperature the current density is directly proportional to the electric field intensity. At a constant temperature, that means temperature constant है. Then current density क्या होता है? Denoted by J. If this is a conductor, this is its cross sectional area. So current density J is equals to I, the current flowing through the conductor, divided by cross sectional area. ये होता है current density. The current density is directly proportional to the electric field intensity. What is electric field intensity? If we are applying if this is the length of the conductor and we are applying voltage V across it, from here to here voltage V, then electric field intensity is equals to V by L. V by L, and its unit will be volt per meter. What will be the unit of J? Current density, ampere per cross sectional area, standard unit, meter square. So the current density is directly proportional to the electric field intensity. So to remove the proportionality sign, J is equals to sigma E. What is sigma? Sigma is called conductivity. And we will study in material science, material science में हम इसे पढ़ेंगे. Sigma is equals to NEAVD. VD is drift velocity, A area, N number of free charge carriers per unit volume, so per meter cube. Now this is J equals to sigma E. So it is called as the first form or point form or microscopic form of Ohm's law. Now if I write, it is I by A, current divided by cross sectional area. I by A is equals to sigma into V by L. So I can write it I is equals to sigma A by L into V, or V is equals to I into L by sigma A. You know what is conductivity? Conductivity is equals to 1 upon resistivity. This is fundamental relationship between them. Conductivity is 1 upon resistivity. More the resistivity means more the resistance, so less will be the conductance. So this will be like this. So V is equals to I into rho L upon A. Now this resistivity at a constant temperature, जो resistivity है, that is the property of an element. Resistivity किसी भी material की property है. So with temperature it's not going to change. If temperature is constant, length will not change and area will not change. So this will be constant. ये चीज एक constant रहेगी and हम इसको बोलते हैं resistance. So what comes now? V is equals to R into I. This is called second form or circuit वाली form of Ohm's law.
At constant temperature, the potential difference across an element is directly proportional to the current flowing through the element. But always remember at constant temperature, because like conductivity is equals to NeAVD, and length, area of cross section. Due to temperature, all these three things can vary, because if temperature increases, it might happen that length of the conductor increase. If length of conductor increase, then area of cross section may get decrease. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर की लंबाई और लेंथ इट कैन इंक्रीज, ये लंबी हो सकती है. एंड व्हेन द कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज लाइक दिस, so what will happen, its cross sectional area will reduce. So what is resistance? Rho L by A. If length increases, area decreases. Length increases due to increasing temperature, area decreases. What will happen in resistance? It will increase. Now shortly you will also see that what's the effect of temperature on conductivity. Temperature conductivity को कैसे effect करता है हम अभी ये देखेंगे. So okay, now this is V equals to Ri. From here only, now what's I? If I say what's I, then this R will go here. I is equals to 1 by R into V. What is 1 by R? If conductivity is equals to 1 upon resistivity, then conductance is equals to 1 upon resistance. So 1 upon R replaced by conductance. I is equals to G into V, or G is constant at a constant temperature. Constant temperature पर resistance constant रहेगा, और resistance constant है तो conductance भी constant रहेगा. So I is equals to G into V. I is proportional to V. This is called third form of Ohm's law. Okay, so we got it. V is equals to R into I. What is I? In the first lecture we told what is current. Its rate of flow of charge, that is dq by dt. Rate of flow of charge, R into dq by dt. It is called as fourth form of Ohm's. Okay, now we will see what is the effect of temperature on the conductivity. Like this is the conductivity is equals to NeAVD. Vd is drift velocity, means the velocity of the free charge carriers inside the conductor or any material in which we are calculating the conductivity. N is the number of charge carriers per unit volume. A is the cross sectional area, and E, what is E? The unit of charge, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So what happens, like take case 1, it's a conductor. So what is the property of conductor? They are good conductor of electricity. The resistance of a conductor is less, और वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं. Why? Because they have a number of charge carriers in them at room temperature. So कोई extra heat required नहीं होती to remove the charge carriers from the bonds. Already there are number of free charge carriers. जैसे ही आप voltage या electric field लगाओगे, the charge carriers start to move. So they are good conductor of electricity. Now what will happen, अगर हम temperature increase करते हैं तो if we increase the temperature, what will happen? Already there are number of free charge carriers, so there will not be substance, or there will not be a good amount of increase in the number of charge carriers. Charge carriers तो पहले ही millions और billions में हैं, so temperature बढ़ाने से इनके नंबर में कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा. N almost constant, but as the charge carriers temperature बढ़ेगा, so charge carriers will acquire more energy. If they have more energy, they will move rapidly, fast, so their drift velocity will decrease, because when there will be number of collisions, like everyone is at high speed and they are moving here and there, then there are number of collisions, so effectively the drift velocity will be reduced. So as temperature increases, conductivity of conductor, or you can say metal, decreases. If we take case 2, that is semiconductor. What happens in a semiconductor? At room temperature,
if it is an intrinsic semiconductor, don't worry, we will study all this. What is intrinsic? Intrinsic is that where there is no doping and the number of electrons is equals to number of holes. Okay, so at without giving any extra energy, कोई extra energy के बिना जो intrinsic में free charge carriers होंगे वो जीरो होंगे. As temperature increases, जब temperature बढ़ेगा, some charge carriers will acquire energy and they will break the bond and will come out, and they will serve as a free charge carriers. So N, that is the number of free charge carriers, will increase. Now this increase in N is very large because initially वहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर्स थे ही नहीं. नाउ चार्ज कैरियर्स आए हैं, इसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी. Same will happen in case of insulators also. Insulators also have like zero or very limited number of charge carriers. Insulators. So in that also when very high amount of temperature, बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर हम उसे सप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से उसमें भी फ्री चार्ज कैरियर्स इंड्यूस होंगे और उनकी हेल्प से हमारी थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ेगी. ऑल्दो the number of charge carriers that are generated in insulator is very less, even if we increase temperature very high. So there it's minimally increasing, yeah, but it is increasing. If anyone says that if temperature increases, what's the effect on conductivity? You will say in conductor it decreases, semiconductor increases, insulator also increases, but little means thodi. Okay, now based on that you will see that what's the effect of temperature on the resistance. RT2, it's the resistance at temperature 2. This is at temperature T1. 1 plus alpha. Alpha is temperature coefficient of resistance. This is different for every element. Like for copper it's less, for aluminium it's more. So it's the material property that with increase in temperature, how much increase in resistance occurs. It is calculated based on that. Like we saw here, like if temperature increases, number of charge carriers changes, drift velocity changes. So किसका कितना चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा अल्फा निकल के आता है. इफ यू वांट ए गुड कंडक्टर क्या होगा? जो टेम्परेचर चेंज होने के बावजूद जिसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो. तो उसके लिए हम आइडियली चाहें तो हमें चाहिए अल्फा जीरो, बिकॉज इफ अल्फा इज जीरो, RT2 इज इक्वल्स टू RT1, बिकॉज दिस ये टर्म तो जीरो हो जाएगी. व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज T2 minus T1. So what will be a good conductor? जिसका अल्फा मिनिमम हो. Okay, so मैं time and I'm again saying it, फिर से कह रहा हूँ, Ohm's law is valid when the temperature and the conductivity of the material are constant, or you can say when the temperature is constant. Okay, now we will see the inductor. What is an inductor? As हमने स्टार्टिंग में बोला था, हम किसी भी सर्किट एलिमेंट को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? By the relationship of V and I. If the voltage across an element is proportional, you say proportional to the derivative of current with respect to time, means if V is proportional to di by dt, then that element is called as inductor. An inductor is designed to store the energy in its magnetic field. So we will drive कि कितनी एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर, बट फॉर नाउ आई विल से 1/2 इक्वल्स टू 1/2 Li square. So in inductor, when energy is stored by current. So there is coil, current flows, magnetic field flows like this. In that magnetic field energy is stored. So current की वजह से एनर्जी स्टोर हुई है. करंट मीन्स चार्जेस आर इन मोशन, और इसीलिए इसको हम एक तरह से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है, क्योंकि बिकॉज चार्ज मोशन में है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है इंडक्टर. अच्छा, इंडक्टर होता क्या है? एवरी वायर इन विच ए करंट फ्लोज, इफ इट्स एसी करंट, सपोज इफ इट्स एसी करंट, it will change its value. Every cycle it will increase, then decrease, then increase, then decrease. So it is the property of an inductor that it tries to reduce these changes or to oppose these changes. ये जो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो इस चेंज को ना होने दे.
with the help of its magnetic field. If it's a single wire, then they will be, if you use the right hand thumb rule, the current is just like so, our finger feels curl like this, so there will be a magnetic field, but it will be very weak because it's a single wire. If we make a coil like this, so many a times current is rotating, or it's going to wire in a coil. So in this, the magnetic field will be strong. So this strong field will offer strong opposition to change. जहाँ पे अकेला तार है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इतना अपोजिशन दे नहीं पाएगा चेंज होने के लिए, बट जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे चेंज होगा. ओके, सो नाउ वी विल सी any conductor, like we saw in a single wire also has some inductance. Any conductor carrying current has inductive properties and may be considered as an inductor, but its inductive effect is very weak. क्यों? क्योंकि वो अकेला वायर है, बट कोयल बना दे, and to increase its inductive effect the number of turns is provided. Now basically how does an inductor works? For that हमें एक टॉपिक करना पड़ेगा, Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हमारा पूरा मोटर, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर्स, इंडक्टर, everything depends on this law, and this is very basic law and very important. Without this there is nothing. So first we will have a plain reading of this law. You can read it. If a flux linking a coil varies as a function of time, then an EMF is induced between its terminals. So what's Faraday's law? That there should be a coil, there should be a flux, it might like this, and there must be a relative motion between flux and coil. If there is a relative motion between flux and coil, then the EMF will be induced. If the flux cuts the conductor, means conductors are stand still, so statically induced EMF like transformer. तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है हमारा, वाइंडिंग यहाँ होती है, वाइंडिंग डज नॉट रोटेट, बट इसके अंदर से फ्लक्स जाएगा और वो सबको कट करेगा. वो फ्लक्स सबको कट कर रहा है, लेकिन वाइंडिंग तो अपनी जगह पे स्टेशनरी है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर में आता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. बट इन ए मोटर और जनरेटर जहाँ पे आर्मेचर रोटेट करता है, वहाँ पे क्या होता है, लाइक दिस इज एन, दिस इज एस, दिस इज आर्मेचर, एंड ऑन दिस देयर कॉइल. सो व्हेन इट रोटेट्स, यहाँ पे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को यानी फ्लक्स को कट कर रही है. सो इन दिस इट इज कॉल्ड dynamically induced EMF. And the value of induced EMF is directly proportional to the time rate of change of flux. The more the coil will cut the flux, the more will be the voltage induced. It's proportional, like V is directly proportional to d phi by dt. जितना फ्लक्स कट करेगा उतना ही अपोजिशन करना, उतना ही अपोज करेगी कॉइल, और उतनी EMF उसमें इंड्यूस होगी. और इसका साइन is determined by the Lenz law, which in the transformer topic we will study peacefully. Okay, so suppose this is a coil. If the flux phi flux is passing through this coil, it will be rotating like this because it's magnetic field. It's not divergent, it's convergent in nature. So if phi is a flux and there are n number of turns, phi flux is cutting how many coils? N coils, like one coil, then two coil, one coil, two coil, three coil, similarly n coils. So what is the total flux linkage? This is total flux linkage. This is called as psi. It is n into phi, number of turns, into flux cutting through every single turn. What is the voltage? Voltage is rate of change of flux or flux linkage when there are number of turns. So voltage induced is d psi by dt. d by dt. What is psi? Replace psi from here, n phi. Look, n into d phi by dt plus phi into में dn by dt. But for all practical applications, जहाँ पर भी हमारी practical applications हैं, number of turns do not change with respect to time. नंबर ऑफ टर्न्स तो किसी भी कॉइल की एक ही बार फिक्स हो जाती है, वो कभी चेंज नहीं होती. सो dn by dt will always be 0.
So what comes voltage? V equals to N into d phi by dt. If I multiply it by di, so N d phi by di into di by dt. What's N d phi by dt? Like it's an inductor, so we said that in inductor voltage proportional to derivative of current. So to remove this proportionality, if we say L, this L is N d phi by. Okay, now you have seen it. And d phi by dt, this is replaced by L. So V is equals to L into di by dt. There is another way. Like what is phi? It's flux. It is proportional to the current. Now we will study shortly after this topic. We will study the analogy कि मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या एनालॉजी है. लाइक मैग्नेटिक सर्किट में हम V लगाते हैं तो करंट आता है. मैग्नेटिक सर्किट में हम I लगाएंगे यानी कि MMF हम लगाते हैं. V अप्लाई MMF और फ्लक्स आता है. और MMF क्या होता है? N इंटू I करंट के प्रोपोर्शनल होता है. तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट. एंड व्हाट वाज फ्लक्स लिंकेज? फ्लक्स लिंकेज हमने पढ़ा था N इंटू फाई नंबर ऑफ टर्न्स इंटू द फ्लक्स. सो फ्लक्स ज़्यादा होगा तो फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा. सो फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi. Here we can say, from this we can say flux linkage is proportional to I because phi is proportional to I. So to remove this proportionality, what comes? Psi is equals to L into I. This is inductance into current. L denotes the inductance. So what is voltage? V equals to d psi by dt. It will be d by dt of Li, L di by dt plus I into में dl by dt also. But for all circuit applications like in networks analysis, the inductance does not change with respect to time. It is considered as constant with respect to time. So generally this term is taken as 0 in network analysis. But if we see like in measurements where they are measuring instruments, in those cases there is change in inductance also. Like if I give you an example of a moving coil dynamometer type. If this is a coil, sorry, moving iron, this is a core, this is coil. If like it's given supply from somewhere else, when current flows, a flux will set up. When current flows in this coil, तो flux set up होगा. If this core goes inside it, so this air path, जहाँ पे जो air है, air की जगह पे क्या आ गया? Iron. अब iron आ गया तो ये जो इसकी permeability है mu, we will study it in analogy. mu जैसी permeability वो change होगी. और what is L? N square mu A by L. We will see कैसे आया फॉर्मूला. So mu change होगा तो L change होगा. यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकता है dl by dt not equals to 0. But for network applications, it's 0. So V is equals to L di by dt in networks. Okay, now see analogy between electric and magnetic circuits. In electric circuits, we said that electron तो हमेशा किसी random motion में घूमते रहेंगे if there is no external electric field is applied. तो उन इलेक्ट्रॉन को एक स्पेशल मोशन में ड्राइव करने के लिए, मूव कराने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए. Which is that force? Electromotive force. Sorry. In same way in magnetic circuits, to move the flux, we need magnetomotive force. We need this force is called magnetomotive force. And what's this? Number of turns N into current in each coil is I. So it is N into I. In electric circuit, we have resistance. Here we have reluctance. F is MMF. There it was current in electric circuit. Here it's flux. So what is flux? MMF upon reluctance. Okay. So here it is clearly visible analogy. It's electromotive force, potential difference, I, resistance. Here it is MMF. What is MMF? Number of turns into current flowing in each turn. This is flux. This is reluctance. So I is equals to V by R, flux equals to F by RL. This is R, it is suffix RL. Reluctance. What is resistance? Rho L by A. What is reluctance? L by A is similar, but here rho is resistivity. Here mu is mobility. That is how easily the domains can rotate. If they can rotate more easily, then the reluctance will be less.
if they rotate very, very not so easily, or it's difficult for them to rotate, so mobility will be less. That means the reluctance will be more, and for the same amount of flux, we will require more MMF if reluctance is more. Okay, now you'll see what is inductance. L is equals to N phi by I. This is from previous derivation. Look here, what was L? What was L? L was equals to N into d phi by di. So if there is no change, then L is equals to N into phi by I. This we are using in that derivation. Okay, so L is equals to N phi by I is equals to N by I is into what's phi? Flux, MMF by reluctance. N by I, what's MMF? N into I by reluctance. Reluctance is L by mu A. So if L by mu A goes like this, so it will be N square mu A by L. What will be the inductance? Inductance will be N square into mu A by L. If like number of turns, they do not change generally with time, area, length, at constant temperature, they all remain constant. It is mobility. The mobility of a material is constant. It do not change with respect to time. Yeah, maybe with impurity like CrGO, HRGO, in those like silicon added steel, in that way we change the mobility, but it does not change with time. So if this is an inductor, this is Vt, its inductance is L, current I. So what will be? L into di by dt, differentiation of current, or time rate of change of current, voltage is proportional to that. तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? इंडक्टर का. दिस इज कॉल्ड फिफ्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. हमने 4 फॉर्म पढ़ी थी. J इक्वल टू सिग्मा E and V इक्वल टू IR, I इक्वल टू GV, लाइक दैट. V इक्वल टू R इंटू dq by dt. तो 4 फॉर्म हमने पहले पढ़ चुके हैं, और ये है फिफ्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. बट पॉइंट फॉर्म कौन सी थी? J इक्वल टू सिग्मा E. दिस वाज द पॉइंट फॉर्म. So from here, what will be di? Di will be 1 by, this L will go here, 1 by L Vt into dt integration minus infinity to t, the time at which we are taking this. So this limit can be broken down to minus infinity to 0, then 0 to t. तो minus infinity से लेके t time तक, somewhere it is 0, it's minus infinity somewhere. So इसको हम तोड़ सकते हैं दो टुकड़ों में. एक टुकड़ा माइनस इन्फिनिटी टू 0, देन एक, और इंटीग्रेशन कर देंगे. आई इज इक्वल्स टू 1 by L माइनस इन्फिनिटी टू 0 V dt प्लस 1 by L 0 to t V dt. So this is called I0, or the initial current at time equals to 0, plus 1 by L 0 to t V into dt. So you remember this equation. In transient analysis, we will be using this equation a number of times. Now if you say what's the function of an inductor? Inductor को हम use क्यों करते हैं? Inductor is used to store energy, and which is a good storer of energy? जो वेस्ट बहुत कम करे. So ideal inductor क्या होगा? जो जीरो वेस्ट करे. प्रैक्टिकल क्या होगा? जो थोड़ा पॉजिटिव में एनर्जी वेस्ट करेगा और पावर वेस्ट करेगा. So power dissipation is zero in an ideal inductor, because in ideal inductor resistance will be 0, there will only be L. What is the energy? As we have studied in first lecture itself, it's integration of power over time, or work done. Vt into it, what's Vt? L into di by dt. What's Vt? L into di by dt. L बाहर आएगा, dt dt, di I di, I di का integration I square by 2. So this is the energy stored. And in an inductor, I have already said, there is current, charges are in motion, so the energy is stored in form of kinetic energy. 1 by 2 Li square. What was psi? Remember what psi? Psi was equals to N phi, which is also equals to L into I, because phi was proportional to I, psi, like that. 1 by 2 psi I, 1 by 2 psi square by L. I will recommend that you remember this. This is very easy to remember. Also remember this. Then you can come at this also. If this is asked in exam, normally all the questions are solved using this only. So ideal. What's ideal? No resistance. No resistance. No power.
dissipation, or power dissipation is equals to 0. This is ideal inductor. But what happens practically? We have to see it. No wire can have zero resistance except if it's a superconductor. That's theoretical concept. Like उसको हमें अभी यूज नहीं करना है. So अगर ये वायर है, if it's a copper wire, then it also has some resistance. So this is of the order of milliohm. Then the inductance, we have separated R and L from here, like we have written R here and L here, resistance. Now if this wire है, अगर इस वायर में uniformly distributed resistance है, when current will flow, there will be drop in resistance. Like if this is at V1, here resistance, this is I, this is R. So here there is a drop I into R. You will see in KVL, don't worry. Then this potential. So these two potential will be different because there is a drop IR. Now this potential and this potential are different. In between there is air or maybe some other material. It will act as dielectric. So there is also interturn capacitance. Interturn means एक टर्न और दूसरी टर्न के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया. क्यों आया? बिकॉज I इंटू आर ड्रॉप आया. उसकी वजह से इन दोनों टर्न के बीच में एक इंटरटर्न कैपेसिटेंस आएगा. सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन इंडक्टर, प्रैक्टिकल इंडक्टर. Okay, now we will see some more points about inductor as they will be using it in our entire subject. So you should be clear about inductor. इंडक्टर के बारे में, आइडियल इंडक्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, पावर डिसिपेशन 0 हमने पढ़ लिया है. इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड मीन्स करंट, करंट मीन्स चार्जेस आर इन मोशन, सो काइनेटिक एनर्जी. इफ देयर इज डीसी सोर्स, व्हाट्स द प्रॉपर्टी ऑफ डीसी सोर्स? डीसी सोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, लाइक करंट वोल्टेज, इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जनरली. सो दिस इज आई. So it does not change with respect to time. So what will be di by dt? It will be 0. What's VL? L into di by dt. If it's 0, so voltage भी इसकी 0 होगी. Across the inductor there will be 0 voltage. But current तो flow कर रहा है, तो कभी ये मत सोचना कि अगर voltage 0 है तो energy stored भी 0 है. Dissipation 0 है, but energy stored is 1/2 L into I square. Okay, the next point. Okay, this is interesting point. This will also be useful in signal and system. The point, inductor. What's VL? L di by dt. If there is inductor, L. So you suddenly it's in relaxed state. Relaxed state means the initial current in this inductor is equals to 0. No current is flowing. इसी में अभी ये relaxed state में कोई current flow नहीं कर रहा है. नाउ आई वॉन्ट दैट इंस्टेंटली जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँ इसमें मुझे 10 एम्पियर करंट मिल जाए. सो वी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी एल इंटू. सो बट आई एम डिजायरिंग कि इसमें एकदम से 10 एम्पियर चेंज हो जाए, 0 to 10. बस टाइम 0. सो वट विल बी 10 by 0 is equals to infinite. Is it possible to provide infinite voltage? It's no. हम कभी भी infinite voltage नहीं दे सकते, because it's practically not possible. So इंडक्टर में कभी भी एक sudden change of current को बर्दाश्त नहीं करेगा. Now let's see some points about inductors. How will we do the analysis? Like the questions में आएगा तो कैसे solve करेंगे? Vt is equals to L di by dt टाइम डोमेन में. लेकिन कभी कभी सिग्नल कोई नॉन साइनसोइडल है या मुश्किल सिग्नल है तो टाइम डोमेन में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा. लाइक इफ द सिग्नल इज e to the minus t minus n minus 1, हमने ये वोल्टेज लगाई तो फाइंड आउट द करंट. इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको लैप्लेस डोमेन, एस डोमेन में लेके चले जाएंगे. वी एस एल और इसका लैप्लेस आता है एस इंटू आई एस. डोंट वरी, सिग्नल सिस्टम में बड़े आराम से करेंगे. इफ इट्स साइनसोइडल लाइक sin omega t or cos omega t, then in that way it can also be solved by phasor domain, v I j omega l phasor domain. This is also you आप इससे familiar होंगे 12th क्लास में भी. like XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, j into omega l. don't worry if you don't know, we will do it.
तो अगर एक्साइटेशन हमारा नॉन साइनसोइडल है देन द गिवन नेटवर्क कैन बी एनालाइज्ड आइदर इन टाइम डोमेन और इन लाप्लास डोमेन इफ इट्स नॉन साइनसोइडल। अगर साइनसोइडल है तो इसको हम फेजर डोमेन में कर लेंगे। फेजर डोमेन यानी जे ओमेगा एल वी फेजर, जे ओमेगा एल इंटू में आई फेजर। और एस डोमेन में क्यों करते हैं? क्योंकि जो डिफरेंशियल है ना, लाइक डी आई बाई डी टी का लैप्लास क्या आया था, एस इंटू आई एस। सो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिस नॉन लीनियर थिंग्स टर्न्स इंटू लीनियर। सो नॉन लीनियर इंटू लीनियर, लाइक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के साथ ट्रांसफॉर्म इंटू लीनियर इक्वेशंस, तो कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाता है। और दूसरी इनिशियल कंडीशंस लाइक आई जीरो नेगेटिव, कि जीरो पे क्या था करंट, और वी सी कैपेसिटर वोल्टेज एट जीरो पॉजिटिव कितनी थी, लाइक दीज कंडीशंस इन द लैप्लास दे आर हैंडल्ड वेरी इजीली। सो इसलिए हम कभी भी अगर नॉन साइनसोइडल सिग्नल होगा तो उसे टाइम डोमेन में, या फिर थोड़ा मुश्किल होगा तो उसे हम लैप्लास डोमेन में ले जाके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक बार और देखते हैं इन केस यू हैवंट गॉट इट राइट। इफ इट्स इंडक्टर बस इंडक्टेंस वी हैव डन इट्स डेरिवेशन। डेरिवेशन आपको पता है कैसे करनी है, लाइक फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, दैट वे हमने की है इस वीडियो में, यू कैन सी दैट। सो नेटवर्क में डीएल बाई डी टी जीरो बिकॉज इंडक्टेंस डू नॉट चेंज, द नंबर ऑफ टर्न्स डू नॉट चेंज, मोबिलिटी डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर हाँ, जैसे जो मैंने बताया था इस मूविंग आयरन गैल्वेनोमीटर में जब अगर कोई आयरन कोर एंटर करेगी तो मोबिलिटी चेंज होगी। सॉरी permeability, mu is permeability changes, so inductance also changes. L is equals to n phi by I, we have done this. Phi is equals to mf by reluctance, हमने ये भी किया है. RLC always linear. In network we consider them always linear, but हम यहाँ पे एक assumption लेते हैं कि हम किसी भी इंडक्टर की कोर को हमेशा सैचुरेशन से पहले ऑपरेट करते हैं, मीन्स द कोर इज नॉट सैचुरेटेड। इस अजम्पशन के अंदर हमारा इंडक्टर जो है वो लीनियर आता है। तो इंडक्टर लीनियर का मतलब क्या है, एल एन फाइव इक्वल्स टू एल आई, एल इक्वल्स टू एन फाइव बाई आई, ये सारी टर्म्स हमने डेरिवेशन में करी है। सो अगर हम चाहते हैं कि एल लीनियर रहे, मीन्स एल डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू करंट, तो एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ये कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स कैन चेंज, करंट कैन चेंज। इफ फाइव बाई आई इज कांस्टेंट, देन एल इक्वल्स टू के इंटू एन। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो फाइव बाई आई का कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर करंट इंक्रीज करे तो फ्लक्स भी इंक्रीज करे, करंट डिक्रीज करे तो फ्लक्स भी डिक्रीज करे। तो किसी भी कोर में एक सैचुरेशन, लाइक अगर यहाँ पे कोर सैचुरेट हो रही है तो उसके पहले फाई और आई जनरली कांस्टेंट होते हैं। लेकिन सैचुरेशन के बाद क्या होता है, करंट, यू कैन इंक्रीज द करंट बट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स जो एक मटेरियल के अंदर घूमते हैं बाई एमएमएफ, अगर वो सब के सब घूम जाएंगे तो उसके बाद तुम कितना भी एक्साइटेशन करंट लगा लो, कोई नए डोमेन तो है नहीं, तो उसके बाद जो फ्लक्स है वो वर्चुअली कांस्टेंट हो जाता है। आई आपका बढ़ता रहेगा, आपने करंट बढ़ा रहे हैं बट फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से नहीं बढ़ेगा। इफ फाइव बाई आई इज कांस्टेंट, एल इज टू के इंटू एन, के इज कांस्टेंट बिकॉज फाइव बाई आई इज कांस्टेंट, सो इंडक्टर इज लीनियर। एयर कोर मींस इफ द कोर इज एयर, सो एयर डू नॉट सैचुरेट। अच्छा, सैचुरेशन में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सैचुरेशन है क्या। आई विल गिव एन बेसिक एनालॉजी, सिंपल, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बाद शायद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इफ दिस इज ए ग्लास ऑफ वाटर, इफ आई से अमाउंट ऑफ वाटर पावर, मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ एंड देन I am measuring the water level in the glass like this. Okay, this is water level in the glass. Initially जब मैं पानी डालूंगा तो पानी आ रहा है, ये भरेगा, ग्लास भरेगा थोड़ा तो वाटर लेवल इंक्रीज करेगा। बाद में जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन बड़ा होता जा रहा है तो वाटर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, करता रहेगा।
But once if the glass gets completely filled, like if this glass gets completely filled, after this ग्लास को पूरा भरने के बाद अगर मैं उसके बाद और पानी डालूं तो ग्लास का साइज तो यही है, तो इसके ऊपर तो वाटर लेवल कभी भी जाएगा नहीं, वो एक्स्ट्रा पानी स्पिल आउट कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, लेकिन वाटर लेवल इससे कभी नहीं बढ़ेगा। यानी कि मैं कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर पावर, मैं कितना भी वाटर डालूं, लेकिन वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन, व्हेन द इफेक्ट इज नॉट इन कंसोनेंस विद कॉज। यानी कि आप एफर्ट लगाए जा रहे हो आप, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो है सैचुरेशन। सैचुरेशन पढ़ाई में भी हो सकती है, इंडक्टर में भी हो सकती है, मे ऑल्सो अकर इन कैपेसिटर, इट मे ऑल्सो अकर इन इकोनॉमी, एवरीवेयर। So that is saturation. I hope I am clear. Now we will see what is linear inductor. Linear inductor means it is if the inductance of the inductor is independent of current, यानी कि phi by I constant, that is called as linear inductor. Non-linear means अगर saturation हो जाएगी, like iron core है, किसी ना किसी करंट की वैल्यू पे तो सेचुरेट होगा, but practically in networks we do not consider that inductor is saturated. We consider it is not saturated and it is working in the linear mode. Like अगर किसी भी आयरन कोर के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं like this I phi, so हम किसी भी इंडक्टर को इसी रीजन में ऑपरेट कराते हैं जहाँ पे phi प्रोपोर्शनल टू I ये कांस्टेंट है जहाँ पे, इसलिए वो हम नेटवर्क में कभी भी नॉन लीनियर कंसिडर नहीं करते इंडक्टर को। If the inductance of the inductor depends on the current magnitude, then the inductor is called as non-linear inductor. Depends on the current magnitude, यानी कि यहाँ पे independent नहीं है। It happens as an you can understand this third part. I have explained it. So ये जो मैंने explain किया था डोमेन वाला कि मैग्नेटिक डोमेन होते हैं, you can study it, you can read it from here. Okay, so now we will start with the capacitor in our next